Hi guys, so let's start with our today's session. I just wanted to come live and just discuss one paper as a whole. So today we will be discussing September 2021 paper 1. We will be doing just quick discussion of September 2021 paper 1. Assuming कि अगर आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्या क्या मेन कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए. So I won't be giving you the same time as I used to give you while we were doing questions. जैसे उसमें आपका 5 minutes के लिए आपको जितना टाइम मिलता था आप 5 marks के लिए अब उतना टाइम मैं नहीं दूंगी. We will just be quickly discussing all the questions at one go so that we can just see कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो what are the main keywords to focus on, what are the main topics that should be there in your content, and was it an easy question or was it a medium level question. We are just discussing this while going through the entire paper 1. In the next session I will be discussing paper 2. So you can just keep your September 2021 paper 1 IFO with you in case you don't have it right now. So let's start with the first question of the day. Make sure your thinking skills are, you have to be very immediate. You won't be getting too much time. I just want immediate to and fro answers from your side. It should not take a lot of your time. Focus on the keywords. Don't give me any detailed points. I don't want any detailed points at this particular time. I just want to focus upon the keywords, on the key highlights to be there in this particular answer. So let's start with our first question now, guys. It's very common question or the very common doubt that I have been receiving nowadays is how to start with the paper. Should we start with the long questions first or should we start with the short questions? As such, there is no rule. It's up to you. आपको 5 मार्कर से स्टार्ट करना है, 5 मार्कर से स्टार्ट करो, आपको लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, आपकी मर्जी है. द ओनली पॉइंट इज बी गुड इन whatever you are doing. Don't give me any general points. IFOI does not want general points in your open book exam. Don't waste your time just searching for the particular type of question in your book. Just go through the question and just interpret it in your own language and try to give your best using the knowledge that you have built in these particular years. I hope by now you must have completed your summary list, you must have completed your assignments, you are done with all your videos, you are done with all the live classes that you have missed, you are completed all the videos that were left to be completed, your summary list done, your assignments done, your UTs have been submitted. Make sure कि अगर आपने II वाला mock नहीं भी दिया है तो भी the mock which is scheduled for IFR students you are just giving it. Don't for every CP1 student who is planning this April 2022 attempt, make sure to appear for both the mock scheduled for IFR students. So now let's start with the first question of the day. Question says two people both aged at 30 focus on the specifics. मैं बार-बार repeat कर रही हूँ, specifics पे बहुत ज़्यादा focus करना. No general points in your answer, no Google, no searching it in the co-reading. Two people both aged at 30 are planning to retire at age 65. Person A is a member of a DB scheme and person B is a member of a DC scheme. So there are two people, दोनों की age 30 है. They are planning to retire at age 65. एक DB scheme का member है, एक DC scheme का member है. They have both received statements from their respective scheme provider which shows the same projected pension benefits at age 65. Compare the risk affecting the benefits that person A and person B will receive. So on seeing the question, on reading the question, it should immediately strike to your mind. The question is asking us benefit risk from the perspective of DB schemes, benefit risk from the perspective of DC scheme. देखो कैसे realize किया मैंने, compare the risk affecting the retirement benefits that person A and B will receive. A क्या है, member of DB scheme, B क्या है, member of DC scheme. As such कुछ specifics बहुत ज़्यादा question में मुझे given नहीं है, तो it should be more of general points कि okay, these are the benefit risk in case of DB schemes, these are the benefit risk in case of DC schemes. So take 5 minutes time and quickly think on your answer and then we will start discussing.
guys, I just try to accumulate all your keywords. आप 5 marks का question है. It's up to you how you want to attempt it, how you want to present it. But maybe I can present it like this: specific risk to A. मतलब risk that is just specific to A, specific risk to B, and then the common risk that both A and B may face. So A क्या था? Member of DB scheme. क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? बेनिफिट रिस्क, यू ऑल नो फ्रॉम योर रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर. Maybe we have insufficient funds because of insolvency of scheme, maybe because of underfunding. We can have risk of changes in benefits, maybe because of regulatory changes, competitor changes, risk of failing to meet members needs, because it is quite possible कि आप fixed benefit ले रहे हो and उसमें inflation protection नहीं मिली. देन अगर हम बी के परस्पेक्टिव से रिस्क डिस्कस करें, अब आपको यहाँ पर डीसी स्कीम के रिस्क डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क डीसी में क्या होता है? लेवल ऑफ बेनिफिट्स लोअर बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, और एक्सपेंसेस हायर देन एक्सपेक्टेड. बेनिफिट्स क्यों आपको वर्स मिलते हैं? बिकॉज टर्म्स ऑफ एन्युटी आर वर्स देन एक्सपेक्टेड. So terms of purchase of annuity worse than expected. Liquidity issues, this is something which is common to both, can be common कि आपके पास assets हैं लेकिन liquid assets नहीं है. Or we can have regulatory or tax changes, again it can be common to both of them. Inflation eroding the real value of benefits, risk of frauds. So general points, not specific to question, it's just specific to your core reading. So I hope all of you are able to attempt it. Now moving to next question. Next question says, a company wishes to appoint an actuary to provide advice on setting up a new retirement benefit scheme. So you can see the first question was pension based. Even the second question is more of pension based. So second question is now saying us, company wishes to appoint an actuary to provide advice on setting up a new retirement benefit scheme for its employees. Due to global pandemic, face-to-face meetings are no longer permitted due to risk of infection. So there is one company and the company is wishing to appoint an actuary to provide advice on setting up the retirement benefit scheme for its employees. But because of this pandemic, face-to-face meetings are no longer permitted due to risk of infection. So for 3 marks, outline का question है, बहुत ज़्यादा details नहीं चाहिए. Outline the information that the actuary should gather prior to accepting the appointment. मतलब कंपनी एक्चुअरी को चाह रही है, कंपनी एक्चुअरी के साथ अपॉइंटमेंट बनाना चाह रही है, लेकिन आपके हिसाब से एक्चुअरी को क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट. सो दिस इज मोर ऑफ योर इनिशियल चैप्टर्स क्वेश्चन. सेकेंड है, आउटलाइन द डिफिकल्टीज दैट द एक्चुअरी में फेस as a result of limitations on face-to-face meetings while determining whether to accept the appointment. So easy questions for 5 marks. You have 3 to 4 minutes time. Fast.
Guys, let's start discussing. So question was, a company wishes to appoint an actuary to provide advice on setting up a new retirement benefit scheme for its employees. Due to global pandemic, face-to-face meetings are no longer permitted due to risk of infection. Outline the information that the actuary should gather prior to accepting the appointment. तो हर बार ये कॉमन बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है कि यार यार आप एक क्लाइंट से मीट करने वाले हो, ठीक है, मान लो मैं एक प्रोफेशनल सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करती हूँ, मैं अगर अपने क्लाइंट से मीट करने वाली हूँ और मेरे को मीटिंग में डिस्कस करना है कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो मेरे को उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए. You can target the general information plus you can target the specific information. So you can tell you need to do research on the background of the client. So it is very important that you are able to understand the client business. You won't be able to provide the advice without understanding the client business. और एक्चुअली को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेक करनी होती है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप उसकी दूसरी पार्टी जो ट्रांजेक्शन के अंदर है उसको कोई एडवाइस दे रहे हो. अगर ऐसा है तो आपको क्लाइंट को अपने बताना पड़ेगा टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. सो टू चेक all the parties involved in the in your contract so as to avoid any conflicts of interest. Then you need to understand the level of risk appetite, maybe objectives of client. तभी आप उनको इंफॉर्मेशन दे पाओगे कि अच्छा हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. You need to understand the level of business. You need to understand their competitors as well. बहुत important है कि हम client को कुछ भी advice करने से पहले उनके competitor की information को check करते हैं, तभी हम उनको कुछ better advice कर पाएंगे. ठीक है, तो some common points. Next, अब जैसे मैंने आपको बताया, need to check on the background, need to understand the business, need to check on the parties involved. आप भी इसी तरीके से लिख सकते हो because the question is of outlining and not of describing. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं इस पॉइंट पर हाईलाइट कर रही हूँ so that you guys are not wasting your unnecessary I mean you guys are not wasting your time in unnecessary and irrelevant content. Focus on your relevant content. You won't get more than 3 marks even if you give me description. Next है, outline the difficulties that the actuary may face as a result of the limitations on face to face meetings. अब क्या है, फेस टू फेस मीटिंग्स नहीं हो रही, आपके हिसाब से अगर फेस टू फेस मीटिंग्स नहीं हो रही तो मेरे को जो अपनी एग्जीक्यूशन करनी है वो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, क्या क्या दिक्कत. सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब हम लोग लोगों से मिलते हैं वी आर बेटर एक्सपोज टू दी एक्सपर्टीज. अगर हम सिर्फ मीटिंग्स वर्चुअल मीटिंग्स में डिस्कस कर रहे हैं, maybe I'm not able to take the expertise, maybe I'm not able to better understand my client because through teleconferences it becomes difficult to understand the client. ठीक है, first, second thing, third thing, maybe technical issues कि मान लो 2 घंटे की मीटिंग चल रही है, 2 घंटे की मीटिंग में लाइट कट हो गया, कोई वाईफाई का इशू हो गया, मीटिंग वहीं पर स्टॉप हो जाती है. यही अगर हम फेस टू फेस मीटिंग करें तो हम भी अपनी इंफॉर्मेशन बेटर डिलीवर कर पाते हैं. So this can also be an issue in execution. So you just have to focus on the difficulties associated with virtual meetings. So it was very easy question. Outlining का था, इसमें इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए. Next, moving to third question. Third question says, an individual is considering starting a business that will involve caring for young children while the children, parents or guardians are at work. The business will be required to meet child care standards set by the government. List the various items of cash flow that would be needed to be allowed for by a model that aims to assess their potential profitability. आप एक business start कर रहे हो, business will be looking after children while their parents are away due to work. So you are setting the, and you have to meet the child care standards as well, that you're providing them appropriate nutrition and care. What are the different cash flows that if you are that would be required in case you want to assess the profitability of this particular business. Again, it's just listing, so it should not take more than 3 to 4 minutes. Start doing it now. Only listing, no details required.
Okay, guys, let's discuss it now. Question was, an individual is considering starting a business that will involve caring for young children while the children's parents or guardians are at work. Business will be required to meet child care standards. List the various items of cash flow that would need to be allowed for by a model that aims to assess. I would rate this question as very easy. तो अभी अभी तक अगर आप देखो हमने 5 मार्क का एक क्वेश्चन डिस्कस किया विच वाज वेरी जनरल, नो स्पेसिफिक पॉइंट्स. अगर आपने नॉर्मल कोर रीडिंग को गो थ्रू किया आप इजीली आंसर कर सकते हो. देन अनदर 5 मार्क्स वाज इजी एंड देन द 6 मार्क्स. तो 16 मार्क्स अभी तक आप आराम से 16 में से 13-14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो. अब ये वाला क्वेश्चन में तो आप यू कैन स्कोर इवन 6 मार्क्स एज वेल इफ यू आर गिविंग मी 12 वैलिड कैश फ्लोज. सो वेरियस आइटम्स ऑफ कैश फ्लो. अगर देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल कर सकते हो. अगर हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट. ठीक है. नेक्स्ट मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज करी है इसके लिए तो आइटम ऑफ कैश फ्लो कैन बी कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ प्रॉपर्टी. अगर मैंने प्रॉपर्टी परचेज करने नहीं करी है तो मैंने लीज पर ली होगी तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद इनिशियल लीज प्लस इसका नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बनाओगे, प्लस योर रेगुलर रेंटल पेमेंट्स दैट यू विल बी मेकिंग टू योर लैंडलॉर्ड. ठीक है. इसके अलावा एनी कॉस्ट इनकर्ड इन रिफर्बिशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. आपको एक प्रॉपर्टी मान लो कोई नॉर्मल खाली जगह मिली है, आपने उसको अपने बिजनेस के हिसाब से चेंजेस करवाए होंगे तो देयर मस्ट बी सम कॉस्ट इनकर्ड इन रिफर्बिशमेंट. तो अभी तक हमने क्या बोला, स्टार्टिंग की कुछ कॉस्ट, मान लो कोई मार्केटिंग कॉस्ट इनकर हुई है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करी है या आपने वेबसाइट बनाई है, उसके भी आप एग्जांपल्स दे सकते हो. फिर आपने या तो प्रॉपर्टी खरीदी उससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी ना खरीद कर अगर आपने लीज पे ली उससे रिलेटेड कॉस्ट. ठीक है. आप रेगुलर रेंटल पेमेंट से दोगे उसकी कॉस्ट, कॉस्ट एसोसिएटेड विद एनी रिफर्बिशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. आपने गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल लिया या गवर्नमेंट को कोई फीस पे करी है इस बिजनेस को सेट करने के लिए, उसका भी कैश फ्लो में आ जाएगा. इसके अलावा अब हम उन कॉस्ट पे आते हैं जो मेरी रेगुलर कॉस्ट है कि अब मैंने अगर चिल्ड्रन को इस पर्टिकुलर मान लो चाइल्ड केयर सेंटर पे बिठाना है तो मुझे उनके लिए टॉयज भी खरीदने पड़ेंगे, मुझे उनके लिए बुक्स भी खरीदनी पड़ेंगी, मुझे उनके लिए न्यूट्रिशनल आइटम्स भी खरीदनी पड़ेंगी. तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस. मुझे उनके लिए अप्रोप्रिएट गार्डियंस भी हायर करने पड़ेंगे हु विल बी लुकिंग आफ्टर दीज चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स आर अवे. सो कॉस्ट एसोसिएटेड विद हायरिंग ऑफ गार्डियंस और टीचर्स. फिर मुझे उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि अच्छा ऐसे संभालते हैं, तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रेनिंग. देन मे बी आप रेगुलर अपनी एडवर्टाइजमेंट करोगे, रेगुलर मार्केटिंग करोगे. ठीक है. आपने कोई बैंक से अगर लोन लिया हुआ है वहां पर आपका इंटरेस्ट जाएगा. आपने जो गार्डियंस हायर करे, टीचर्स हायर करे, उनको रेगुलर सैलरीज जाएगी. मैं मंथली कॉस्ट की बात कर रही हूँ. ठीक है. फिर बच्चों के लिए कोई फर्स्ट एड अगर है तो उसकी कॉस्ट हो गई, जो रेगुलर खाना आएगा सेंटर पे उसकी कॉस्ट हो गई, कोई अगर बाहर आपने गार्ड रखा हुआ है उसकी कॉस्ट हो गई. ठीक है. और प्रॉफिट आया, प्रॉफिट पे टैक्स पे कर रहे हो आप गवर्नमेंट को, उसकी कॉस्ट होगी. सी दीज आर वेरी कॉमन आइटम्स दैट यू शुड बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई. तो 16 मार्क्स का काफी इजी पेपर है. इवन इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड यू कैन स्टिल आंसर दीज क्वेश्चंस. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 4. A life insurance company writes a wide range of business including savings, annuities and protection products. So company saving products भी दे रही है, company annuities भी दे रही है और company protection भी दे रही है. Result of a recent study into the effects of a new treatment for a common form of cancer that mainly affects women show a 20% reduction in mortality rates compared to those who did not take the treatment. Discuss the issues that the insurance company would need to consider when setting the provisions to make it for its existing business following this new information. So bit of technical plus bit of application. Start doing it right now. Again, all those who joined late, guys, I'm not discussing detailed answers here like we used to do in class. We are just overlooking the entire paper. So it's a 6 marks discussion question, not more than 5 minutes for the same. Just try to frame only the key points.
Let's start discussing. क्वेश्चन में ना देखो तीन बिजनेसेस मेंशन्ड है, सेविंग्स, एनिटीज, प्रोटेक्शन। तो ये मेक श्योर करना है कि जब हम आंसर दे रहे हैं तो मैं आंसर में तीनों बिजनेस को एटलीस्ट एक एक बार लेकर आ रही हूँ, बिकॉज इट विल नॉट मेक सेंस टू गिव द आंसर विदाउट मेंशनिंग दीज। अगर क्वेश्चन में बहुत डिटेल्स मेंशन है तो सेम आपके आंसर में भी वही डिटेल्स होने चाहिए। आप मुझे अगर नॉर्मल एक इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से आंसर दोगे विदाउट मेंशनिंग एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन डिटेल, I will not be able to give you perfect score. So remember this, if question is detailed enough to cover different type of products, your answer should be detailed enough to comment on those products. So question was, a life insurance company writes a wide range of business including savings, annuities and protection. Results of a recent study into effects of a new treatment for a common form of cancer that mainly affects women show 20% reduction in mortality rates compared to those who did not take the treatment. मतलब एक recent study हुई है, उन्होंने कुछ न्यू ट्रीटमेंट किया फॉर द कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर एंड दैट कैंसर मेनली अफेक्ट्स वुमेन, and this study showed that those who took this treatment they actually suffered 20% reduction in mortality rates. So discuss the issues that the insurance company would need to consider when setting the provisions to make for its existing business following this new information. अब आपको सेविंग्स के लिए किस तरीके से प्रोविजंस बनाने हैं, एनिटीज के लिए और प्रोटेक्शन के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग इंफॉर्मेशन को, योर फर्स्ट पॉइंट शुड बी कि हाउ द कंपनी इज परसीविंग द इंफॉर्मेशन टू बी क्रेडिबल। इफ यू फील द इंफॉर्मेशन इज क्रेडिबल इनफ कि आपके हिसाब से जो ये स्टडी हुई है वो एक लार्ज डेटा पे हुई है and you have access to that particular data and you feel that the data in the study is same as your particular data, then you can rely on the study and can lower down your provisions. But if you feel that data is not symmetrical, maybe वो women और आपकी liabilities में women का कोई major portion है ही नहीं, या जिस एज या प्रोफाइल पे उन्होंने अपने डेटा को स्टडी करवाया वो एज प्रोफाइल मेरी लाइबिलिटी से मैच नहीं कर रही है, तो मुझे इस स्टडी पे बिलीव नहीं रखना चाहिए and I should continue holding the provisions at the same level that I was holding earlier. So it's up to the company that how they are perceiving the information. Maybe you can say let's not do anything, let's keep even more provisions so as to meet the risk of longer life expectancy, especially अगर आप annuities issue कर रहे हो, so it can be possible that we have a longer life expectancy, so you are holding more provisions for savings products. I mean this particular study should not impact much, assuming कि saving के अंदर हमें डेथ बेनिफिट नहीं मिल रहा, प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में हमें सिर्फ डेथ बेनिफिट मिल रहा है, तो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे हायर प्रोविजंस होल्ड करने हैं, लोअर प्रोविजंस, डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, डिपेंडिंग ऑन द डेटा अंडर स्टडी, depending on how you perceive the information to be symmetrical with your business, is it compatible with your business. But for annuities you should hold your provisions more. For savings you should keep on holding at the same level. Maybe you can wait for some of the better studies from regulators, maybe you can wait for approval from the regulators to add more studies to your credible, because it feels that the data is not credible enough. डेटा में अभी भी अब यहाँ पर हम अभी होमोजेनिटी हेटेरोजेनिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्रेडिबिलिटी की बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ डेटा अंडर स्टडी एक अनदर पॉइंट है तो आपको फोकस करना चाहिए। हो सकता है आपके लाइबिलिटीज में विमेन का इतना बड़ा पोर्शन ही नहीं है, तो आपकी प्रोविजंस इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होनी चाहिए। So general points that should be there in your answer. I would rate this question as medium level difficult. It's not easy to identify just on reading the question. पहली चीज जो मुझे दिक्कत लगती है कि many students do not focus on savings, annuities and protection individually. They just give general answer and sometimes they just feel कि it's very important to realize that this is actually a question of your कि हम लोग एक पर्टिकुलर डेटा पे रिलाई क्यों नहीं करें. इट्स एक्चुअली क्वेश्चन बेस्ड मोर ऑन डेटा एंड assumptions rather than your later chapters. Okay, now let's move to next question. Next question is, an insurance company in a developing country is planning to launch micro insurance products for farmers who live in remote parts of the country. Suggest possible micro insurance products. Explain how the insurance company would approach the design of micro insurance. So first is the general. Second is focusing on the design of these products. So only if you know the first part, then only you can comment in the second part. So 7 marks का question है in next 5 minutes.
Okay, guys, let's start discussing. Question was, an insurance company in a developing country is planning to launch micro insurance products for farmers who live in remote parts of the country. Suggest possible micro insurance products that may meet the farmers needs. तो आपको बस फार्मर्स के हिसाब से कौन से इंश्योरेंस प्रोडक्ट उनके लिए यूजफुल है वो कमेंट करना था. यू कैन कमेंट ऑन एनी 4 to 5 माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट. सो हम बोल सकते हैं कि फार्मर को लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस लेनी चाहिए. Basically, insurance that gives protection to damage of crops or livestock due to adverse weather. फार्मर्स को हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए ताकि अगर कोई बीमार हो जाए तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के टाइम पर पैसे हो जाएंगे. देन फार्मर्स को वेट कॉस्ट इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेट कॉस्ट इंश्योरेंस ले रहे हो. अगर आप ठीक है, उसके अलावा अगर आपके आप ये बोल सकते हो टर्म इंश्योरेंस भी एक ले लेते हैं. टर्म इंश्योरेंस भी चलेगा. पब्लिक लाइबिलिटी भी, वैसे तो फार्मर्स के लिए पब्लिक लाइबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है. दे कैन टेक पब्लिक लाइबिलिटी एज वेल. देन दे कैन टेक, क्योंकि फार्मर्स के बाद ना बहुत ज्यादा ट्रैक्टर्स वगैरह ये सब चीजें होती हैं, तो दे कैन टेक व्हीकल डैमेज और मोटर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. तो आप बस इंश्योरेंस का प्रोडक्ट और एक लाइन में उसके डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट करोगे. Next is explain how the insurance company would approach the design of these products. अब जनरल बताना है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिजाइन नहीं बताने. आप एक ही प्रोडक्ट चुन के मुझे डिजाइन नहीं बताओगे, आप जनरल बताओगे. बेसिकली देखो, इंश्योरेंस कंपनी को कौन से टारगेट करना है. हम ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंशियली लेस सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस को टारगेट करना है. तो दे शुड मेक द प्रोडक्ट सिंपल. इट शुड नॉट बी टू कॉम्प्लेक्स दैट फार्मर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. और आपको अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बेचना है कि आप फार्मर्स को बोल रहे हो वैसे तो प्रोडक्ट्स का प्रीमियम इतना है, लेकिन क्योंकि हम लोग ये आपको लिए बेच रहे हैं तो हम लोग कम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं. मतलब यू शुड ब्रिंग सम सेग्रीगेटर्स टू योर प्रोडक्ट्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंश्योरेंस, कि क्यों ये वाले प्रोडक्ट्स आपके लिए सस्ता है, बाकी लोगों से तो हम इतने ले रहे हैं, लेकिन बिकॉज यू आर अ फार्मर तो वी आर चार्जिंग दिस. Then you have to make your products design in such a manner that you are able to understand all your customer needs. कि ऐसा तो नहीं है कि कोई और टाइप की भी इंश्योरेंस हमारे फार्मर्स को चाहिए जो हम लोग अपने प्रोडक्ट्स में कवर नहीं कर रहे हैं. तो वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट्स इन सच अ मैनर that we are covering all the needs of my farmers. Then distribution channel should be quite strong. तो मुझे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑप्ट करना है जो मेरे फार्मर्स को पसंद है. ये नहीं कि मैं वहां जाके एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ और वो एडवर्टाइजमेंट अगर उन लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा तो उस चीज का फायदा क्या. आप वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करो, आप उन लोगों के थ्रू उनको भिजवाओ जिन लोगों पे वो लोग ट्रस्ट करते हैं, so that it can help to reach the target audience. Then make your products competitive, take into account competition as well. So second part was more of contract design, but not specific to factors affecting contract design, just general points, which even if you have read that particular chapter once, you should be able to know. And first question was quite easy. You are supposed to comment on the products that can be taken for this particular, be it life insurance or be it general insurance products. Again, this I would rate this question as easy. Now let's move to question 7 first. So try doing question 7, 12 marks question. You have 7 to 8 minutes time.
Okay, guys. So question was, an investment management firm is launching a new range of funds to be marketed as ethical investment funds. So बहुत ज़्यादा आजकल ये ethical investment funds मतलब basically focused upon है. तो ethical investment, before I actually proceed with the answer as well, ethical investment funds का मतलब क्या है? कि मतलब you are actually investing in those particular funds, you are investing in those particular companies that behave in an ethical, responsible manner. Matlab, while launching their products, while setting the targets, while doing the business, they make sure that they are doing, politically viably, and they are doing it in such a manner that it is not disturbing the environment. Their products are in such a manner that it is not disturbing the environment. कोई climate damage नहीं हो रहा, कोई weather disruption नहीं हो रही, socially सारे stakeholders के interest को वो picture में ले रहे हैं. That is what ethical investment funds are. So ethical investment funds का मतलब ही यही है कि while choosing investments, while choosing your investment managers, you are actually dealing with those companies that are protecting your environment, that are ethically good, मतलब they are taking ethics into picture, and they are not just focusing only on financial aspects. So question first part is just description only. कि outline the possible ethical criteria that the new range of funds will need to meet. Environment friendly होने चाहिए. Like suppose ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कार्बन एमिशंस हो रही हैं, या फिर आप रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हो, या फिर आपके साथ में जो लोग रहते हैं आप वहां पर कोई नॉइज पोल्यूशन हो रही है. ये एथिकल नहीं होगा. ठीक है. आप एथिकल, हमने एनवायरनमेंट के साथ साथ आप सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को पिक्चर में ले रहे हो, प्लस देयर इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अगर आप लोगों ने CB1 रिसेंटली क्लियर किया हो तो CB1 में एथिकल इन्वेस्टमेंट फंड्स को हम कहते हैं कि दोज दैट एक्चुअली फोकस ऑन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है कि मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद हम लोग मैनेजर्स हायर करते हैं, देन वी हैव एम्प्लॉइज. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मैक्सिमम वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, दे आर नॉट टेकिंग दिस, दे आर नॉट टेकिंग देम इनटू क्राइटेरिया. सो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ही यही होता है that they are getting remunerated well, they are working in safe working conditions, so their remuneration is good, the working conditions are safe, they are being made fair payment for the work that they are doing to the business, all the stakeholders are being treated fairly, and there is not particular concentration of stakeholder of one particular sector. We have a diverse sector. That is what is meant by good corporate governance. So even good corporate governance comes under your ethical objectives, environment friendly comes under your ethical objectives. You are not focusing on one particular political section of the society, you are focusing on a secular investment type of thing. So that is your ethical criteria. Next है, one of the firm's directors has expressed a concern that ethical investment funds will always produce lower returns than investment funds without these restrictions. कि उनके हिसाब से, क्योंकि ethical में हम लोग बहुत सारी restrictions डालते हैं, so they will always produce lower returns. Therefore, the lower performance of ethical investment fund risk damaging the firm's brand. So discuss whether ethical investment funds have lower returns than investment funds without these restrictions. So हमको दोनों पॉइंट्स बोलने हैं. Yes, it can be true कि ethical investment funds को at times lower returns मिलेंगे because आप उन पे बहुत ज्यादा restrictions दे रहे हो. सकता है अगर वो एक particular political section को target करते तो उनका रिटर्न काफी हाई हो जाता है. हो सकता है अगर वो चीजें बनाते जो कि इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल है, जो कि मान लो सिटीजंस के लिए हार्मफुल है, लाइक दोज व्हिच आर प्रोड्यूसिंग टोबैको कंपनीज, so maybe the return is high, but at the same time they are not holding ethical criteria. So it can be quite possible that if you are targeting one particular section of the society, or if you are producing those products which do not have any restrictions, returns can increase. But at the same time we can focus on the other thing as well कि अगर हम लोग ethically follow कर रहे हैं, इसका मतलब more and more आजकल क्या हो रहा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक कार्स हम लोग लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स,
तो ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे सोसाइटी अवेयर होती जा रही है वैसे वैसे सोसाइटी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को छोड़कर एथिकली फंड्स को एथिकल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रही है। हम भी वही चाह रहे हैं यार कि ऐसी कोई गाड़ी आ जाए जो कि मेरे को पोल्यूट ना करे, कि हमें भी कुछ ऐसे होममेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना। हम कहते नहीं हमने बाहर का तो खाना है, लेकिन बाहर का भी हम होम कुक्ड फूड ही खाना पसंद करेंगे। हम स्विगी पे ऑर्डर तो करते हैं बट वी जनरली गो टू दैट हेल्दी सेक्शन. So this is because of the changes which are because of the awareness. So it used to be there that earlier they suffered from low returns, but as a result of changes in the society, as a result of awareness in the society, now people and stakeholders are investing in these type of businesses because they feel that this is the demand of these type of businesses. We have future growth prospects of these. Because of the future growth prospects, the price is going to increase in near future because of more and more investments in these particular funds. So it is not, I mean, you cannot just conclude it that they are low returns. It is quite possible that they will give you very high returns in near future. Next, propose how the how the firm could mitigate risk to its brand and profitability. अभी जैसे हमने ऊपर mention किया कि क्योंकि they can have lower risk or lower returns, so it can actually risk their brand and profitability. तो how you can mitigate your risk? It's very important कि जो आप कर रहे हो, जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करवाना है, तभी वो आपके प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड करेगी। अगर एथिकल फंड्स ऐसा कुछ नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है मान लो, तो उनको अपनी अवेयरनेस खुद से क्रिएट करनी होगी, तभी लोग आप में इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका अपनी ब्रांडिंग करने का यही है कि आपको लोगों की अवेयरनेस करनी है, आपको चेंजिंग कल्चर का फायदा उठाकर वो करना है जो कस्टमर्स को आजकल पसंद है। So you have to be, I mean, you just don't have to focus on return, you have to focus on less risk. You have to make them realize that even at a lower risk, the better returns are possible. You have to change your products in such a manner that there is a demand for the products while at the same time it is meeting your ethical criteria. So your communication, your activities that you do, your marketing that you do, the investment managers have to be hired in such a manner that your investment managers are also following these ethical criteria. Then only you can build your brand. So again, I would rate this question as a medium level difficult question. Now let's move to question 9. So just quick discussion of question 9 in next 5 minutes.
So the question was, a life insurance company in country A sells annuities that are guaranteed to increase each year in line with official price index that is published by the country's government. So there is life insurance company and they are selling annuities, and annuities are continuously increasing with an official price index which gets published by country's government. So describe the factors that a life insurance company needs to consider in selecting the investments to back your annuity liabilities. अब आपको पता है कि आपको मतलब रेगुलर एन्युटी पेमेंट्स करनी है और वो भी लेवल पेमेंट्स नहीं करनी है, आपको एक तरीके से इंक्रीजिंग पेमेंट्स करनी है. तो आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपनी लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए. So the first factor that we have to take into consideration is we should also select those assets the proceeds of which are not level, but the proceeds of which are also continuously increasing in line with a particular index. But it is difficult to understand, or it is difficult to find those assets which have the same index as the index of the liability. So maybe those particular type of assets are not available, or maybe कोई ऐसे assets नहीं available होंगे जिनका term बिल्कुल exactly same होगा जो मेरी annuities का term होगा. शॉर्टर ड्यूरेशन वाले एसेट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट लॉन्गर ड्यूरेशन जितने एनुइटीज मान लो अगर 40 इयर्स तक चलेंगी तो इतने बड़े ऐसे इंक्रीजिंग एसेट्स मिलना बहुत मुश्किल है. And moreover, I have to make sure that the currency of the payments that I receive is same as the currency of the payments that I have to make. So best possible investment इस केस में क्या है, आप इंडेक्स लिंक एनुइटीज में इन्वेस्ट कर लो. And also those index link annuities का मतलब क्या होता है, that the payments will not remain same every time, the payments will keep on increasing with the inflation index in your economy. So we just have to make sure that we are selecting those index linked securities where the index is almost similar to the index mentioned in the question. But it is quite possible that it may not be a proper match to your liabilities because of the differences in index, because of differences in duration, and sometimes we can have like counterparty risk as well. If the party defaults to make you the payments, you might not be able to meet your liabilities. But yes, you can purchase in order to avoid this risk as well, you can purchase diverse index linked securities of different types so that overall the average price that you're getting is similar to your payments. The government of a country A has decided to make changes to official price index and create a new index. Suggest reasons for the government decision. अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपने प्राइस इंडेक्स अपनी एनुइटीज जिससे इंक्रीज हो रही है वो आपने चेंज कर दिया है, तो अब आपने ये क्यों चेंज किया होगा. द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक चेंज टू योर ऑफिशियल प्राइस इंडेक्स. मे बी यू फील दैट द न्यू प्राइस इंडेक्स इज द बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ एन इन्फ्लेशन. जो हम अर्लियर प्राइस इंडेक्स यूज कर रहे थे दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द करंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन because of changes in the economy. That index is not correct now, and if we keep on using the outdated index, the securities which are providing index linked return may not be able to justify the inflation. हो सकता है न्यू इंडेक्स या तो हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा है या फिर लोअर लेवल को इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा है, व्हिच इज एक्चुअली अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. एंड जो हम लोग जैसे अगर आपने 11th 12th में स्टैट्स पढ़ी होगी और उसमें हम लोगों ने वेटेड प्राइस इंडेक्स ज्योमेट्रिक प्राइस इंडेक्स निकालना सीखा है, तो वो इंडेक्स जो ज्यादा से ज्यादा आइटम्स, जो ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कवर करता है, हमेशा वो इंडेक्स बेटर होता है. तो हो सकता है पहले वाले इंडेक्स में आपकी सिर्फ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स कवर थे जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एवरेज निकल रही थी. नए वाले इंडेक्स में ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ज्यादा आइटम्स ऑफ योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर कवर्ड, so that's why it's a better index. Next है, discuss how a life insurance company could be affected by the introduction of a new official price index. अब कंपनी अपने एनिटीज को किस इंडेक्स से बेस कर रही है, विद द प्राइस इंडेक्स दैट इज लॉन्च, दैट इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड गवर्नमेंट ने अगर प्राइस इंडेक्स से चेंज कर दिया तो दैट मींस यू विल हैव टू रिवाइज योर लायबिलिटीज. जो आपने कैलकुलेट किए कि आपके कैश फ्लोज चेंज होंगे, आपकी एनपीवी चेंज होंगी. अगर मान लो आप कोई गारंटीज दे रहे थे बेस्ड ऑन द अर्लियर प्राइस इंडेक्स, वो आपकी गारंटीज की वैल्यू चेंज होगी. अब क्योंकि मेरी लायबिलिटीज चेंज हो रही है तो देयर विल बी अ नीड टू रिवाइज योर एसेट्स एज वेल इन ऑर्डर टू प्रॉपर्ली मैच देम. अब आपको फिर से देयर विल बी अ रीइन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व्ड दैट यू हैव to redeem your current assets, and you will have to find a better investment strategy which gives you better assets with the return matching with the official index. So again there will be difficulties associated with that.
So it will create some confusion, and it is quite possible कि इतनी जल्दी कोई ऐसे assets नहीं आएंगे जो exactly same मुझे index देंगे. एंड सो मेरे पास इस केस के लिए इंडेक्स लिंक सिक्योरिटीज बहुत लिमिटेड अवेलेबल होंगी. So maybe I can invest in some property, or maybe I can invest in some other type of securities which give me a real return that is somewhere matching with the return that these new level of annuities are that I'm supposed to provide. So the point is, you have to just mention it will lead to changes in your cash flows, it will lead to change in your present value of liabilities. Because of changes in liabilities, there is a need to go for recalculation. Then it will lead to changes in your assets. So index linked securities you will need to identify again. If they are not available, go for other securities that provide you similar return. So I would rate this question as easy. It was not at all a difficult question. If given considerable time to attempt, this seems to be easy question. So बहुत easy था पहले पार्ट में. क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, दूसरे पार्ट में इंडेक्स क्यों चेंज किया, तीसरे पार्ट में अच्छा इंडेक्स चेंज कर दिया तो हाउ इट विल इम्पैक्ट माय कंपनी. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. Okay, let's do question 10. So last question of today's session, I will be carrying forward with the remaining questions in the next session along with paper B discussion. So last question of today's session, let's start discussing it in next 7 minutes.
Okay, guys, let's do quick discussion. A general insurance company only sells household contents insurance. Company is now considering launching new contents insurance product aimed at individuals living in retirement homes. Outline the cost that insurance company would incur as a result of the launch. तो क्या क्या cost है सिर्फ list करना है आपको. Maybe the cost associated with marketing. ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी कॉस्ट होगी आपकी. सेल्स एक्सपेंसेस हम लोग लिख लेते हैं. Then you need to hire experts to to make products suitable for this type of insurance. Then they need to review homes so that you can cover the contents that need to be there in this particular type of insurance. Then you need to revise your reinsurance, so cost associated with that. You need to revise your model of pricing or reserving, cost associated with that. So these are the general costs that you can mention. Commission expenses भी mention कर सकते हो आप. Discuss how the sales volume of this new product will impact the company's regulatory capital requirements. अब regulatory capital requirements कैसे impact होंगे depend करता है कि हम इस new product में capital strain कितना आता है. अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा initial capital strain होने वाला है तो definitely as per regulatory pressure it will lead to more of solvency requirements, capital, additional capital requirements. And if you feel that the product involves a lot of guarantees, if you're providing guarantees again in this type of products, again the capital requirements will be high. And हम एक जनरल भी कमेंट कर सकते हैं कि इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हाई रखेंगे बिकॉज अगर आप ये रिटायरमेंट होम्स के कंटेंट के लिए अगर पहली बार इस टाइप का प्रोडक्ट ला रहे हो तो you need to hold capital because your assumptions can go wrong, the capital strain can be greater than expected, because and moreover the volumes of business can also turn out to be lower than expected. There can be some uncertainty related to experience, claims can turn out to be greater or lower than expected, there can be some issues with regard to expertise. So as a safety margin you should hold more capital. Next is 1 year after the launch of the new product, the number of claims has been significantly in excess of that expected. An independent analysis has identified the following possible causes. Insurance company has written larger volumes than had been expected. To save costs, insurance company outsourced the claim process to an independent firm with experience in target market. Discuss how insurance company could adapt the underwriting and claims process in order to improve future claims experience. तो underwriting better करने के लिए what they can do is they can improve their underwriting by asking questions. जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस आस्क करोगे उतना आपकी अंडरराइटिंग बेटर होगी. ठीक है. एंड देन रिव्यूइंग द फॉर्म, इवन इफ यू हैव आउटसोर्स योर अंडरराइटिंग, मेक श्योर दैट यू आर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन फॉर्म. देन व्हाट एल्स, यू कैन पुट डाउन सम एक्सक्लूजन क्लॉजेस सो दैट अगर ऐसा एरिया है जिसमें चोरी के ज्यादा चांसेस है तो आप उस एरिया को नहीं कवर कर रहे हो, आप उसके अंदर एक्सक्लूजन क्लॉजेस डाल रहे हो. ठीक है. आप जितनी ज्यादा अंडरराइटिंग करोगे उतना एंटी सिलेक्शन रिस्क आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. You need to control your anti selection in order to improve your underwriting. Claims processes के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, claims process हमें strict रखना चाहिए. अगेन क्लेम्स प्रोसेस में हमें अंडरराइटिंग करनी चाहिए ताकि जो इनिशियल अंडरराइटिंग हुई है वो क्लेम अंडरराइटिंग से मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही. सो अगर छोटा क्लेम है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा क्लेम है तो अगेन यू आर सेंडिंग सर्वेयर्स, यू आर विजिटिंग रिटायरमेंट होम्स. if you have outsourced this to experts, you are making them sure that they are also reviewing the claims by visiting the location. Then अगर आप initial underwriting भी अगर आपने outsource करी है तो again they have to be more strict. They are also asking as detailed questions as they can. So ask them to tighten the evidence requirements at the time of claims arising. Just make sure that they are tightening the requirements. Then get your assumptions and everything peer reviewed. ठीक है. And if the claims are coming from the same location every time, then revisit your assumptions. Maybe you can put down the criteria कि अच्छा इस particular location के अगर आते हैं because they are exposed to certain risk, they are exposed to flood risk, they are exposed to any natural disaster risk, or they are prone to some activities, terrorist activities or something. तो बहुत ज़्यादा chances हैं कि यार इस particular area से claims तो आएंगे ही आएंगे अगर वहाँ से कोई insurance ले रहा है. तो maybe we can hire down the premium. fraudulent claims को identify करने का आपके पास तरीका होना चाहिए. You can put down excesses, you can give no claim discount so that easily we are able to identify fraudulent claims. So this was
more of I would say a similar question that had already been tested in past. तो as such इसमें आपकी कोई new knowledge वाला question नहीं था. If you have done different market I mean past paper questions, this was a similar style of question as tested in past papers. So we are still left with question 11, 8 and 6. I would be taking over this in the next session, and we would be doing next session also for paper B discussion. So I think it will take 2 more sessions to complete the entire September 2021 unit. The only reason for doing this in so detail is that you guys are able to identify कि अच्छा instantly मतलब this I am doing this in so much on immediate basis कि the moment I give you a question and then in next 5 minutes we start discussing, this is just done to make sure कि on instantly reading the question what are the certain key points that should be there in your mind and what are the certain things that you should be focusing when you are giving just quick read to the question. The more you give a better read to the question, better you will be able to frame your answers. And it's very important, instead of focusing on irrelevant content, you are focusing only on the specifics. अब इतने सारे हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, कहाँ पर हमें जरूरत लगी कि हमें बुक रेफर करनी है, तो बुक को भूल जाओ, बुक नहीं है, सब कुछ ये है जो आपने नॉलेज आपने सीखा है इतने महीनों में, जो आपने नॉलेज बिल्डअप करी है. Just focus on that, and it's very important, pay attention to your presentation skills. Although I have been getting mails on daily basis ki okay, this is the question and this is my answer, do you think my answer is correct or not? So we are done with IIA exams now, and now I will be focusing to IIA students. So guys, you don't need to give me a reminder mail because I've been receiving mails from multiple of CP1 students. Earlier I was just focusing on IIA students because they had their exams in the previous week. So now we are done with IIA exams and I will be focusing on the mails of IIFL students and all those जिन्होंने UT submit नहीं करे because of whatever reason. I am not aware of your progress, so it will be difficult to comment that how you are proceeding. It's very important that pay attention to the mock. And I think last week we kept session on individual basis to just discuss that how you should be proceeding. So if you took that session, just make sure कि जो हमने tips या जो हमने चीजें highlight करी थी, आपने उन चीजों पे focus कर रहे हो. It was more on individual level. So I realized that almost every one of you are now done with the course. You are just focusing on your summary list and assignments. Just keep on focusing that, and just near to your exam, like 2-3 days before exam, forget about everything else and just focus on your core reading, so that at least the main content which is there for core reading, you are not forgetting that. अभी के लिए सिर्फ पास पेपर्स करना, अभी भी सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, 20-25 दिन है, तो just focus on the past papers as of now. And in last week of the exam, just 2-3 days जब ले जाएंगे, तब आप सिर्फ core reading करना, मतलब दिन के 5-6 chapters आपने read कर लिया on daily basis as and when you get time, so that the content is fresh in your mind near to your exam. Okay, then that's it from my side for the day. Thank you.